Like I was saying, yeah, it's like I started like people ask my meaning. Like it's very much similar to what this documentary is also talking about. Janantik, like one meaning, like it's a Sanskrit word. So one meaning of Janantik is person who lives on the boundaries between village and the forest. So I am that person who always lives on the boundaries, different kinds of boundaries. And so let's see. And I'm making documentaries, working in feature films, assisting people, and writing, directing, researching, and discovering myself on in this beautiful journey. So that's me myself. Hello, I'm Virendra Valsangkar. Uh, Today I'm very happy that Vikalpa is going to screen Disha Swarajyachi towards self-governance. This is a 53-minute long documentary, and basically it's about struggle of a village in Vidarbha. The name of the village is Lekha. It's a very small village. It's a story of this small village who works with consensus. So consensus, working with consensus, it sounds very utopian idea. So people think that whether it's possible to work with consensus. So सर्व सहमति जिसको बोलते हैं. So सर्व सहमति से कारोबार चलाते हैं, and that's why the entire concept of how these people actually do the experiment of self-governance is the story of the film. And in that self-governance, they have achieved leading the forest fights and many more achievements. About myself, I'm working in filmmaking from since 1996, I can say. Initially, I started as an assistant in editing and direction. I worked with Sumitra Bhave, Sunil Kankar. From 2000 onwards, I started working as independent filmmaker. So I worked on television programs, short films, documentaries. I have also worked as a editor for few features, and as a director, one of my documentary, it's a docudrama called as Vishnupan Gandhi. It won a national award in 2012. So it's a biographical film about the founder member of Prabhat Film Company, Vishnupan Gandhi. So that's about me, and I would like to share about the process of the film after we watch the film. There is a beautiful story behind it, how we made this film. So I definitely share that with you afterwards, and of course in Q&A session. Sumitra Bhave, my mentor, she actually was planning for a bigger project. It was supposed to be a biographical film on Vinoba Bhave. So the work of Vinoba, and she wanted to make a movie on that. And so she started researching. And while researching, process was going on, she came across this village, and which is a Gramadani village. And so she wanted to go there, and she went there, and she actually picturized few things for the research purpose. So when she came back, it was the material for the research, and whatever the recording was there. I mean, whatever recording happened, shooting happened, that was meant for the research material. But since the shooting happened, though, the villagers were very keen, and everyone was keen, and they said that can we make a documentary out of it? And so Sumitra ji asked me, since we had a long time bonding, and I worked on many of the projects which directed by her, and I edited the project. So she asked me whether you can edit the footage and you can make a film out of that. So I tried to edit, but it was not possible to make a film out of that because the shooting didn't take place for the making of a documentary. So I said we need to shoot it again because this material is not enough. So she said, yeah, we can do that, and you can go ahead. And that time she was not well, and she said that you can go and shoot. So I willingly actually took the initiative, and I said, yeah, I can shoot.
But the shoot didn't take place that time. COVID was going on and a lot of things were happening, so the shooting didn't take place. And after that, Sumitra ji passed away during COVID time. So I thought that it is the end of the project and I can't make it. But again, I mean, after a year or so, again, these people started contacting whether it's possible to make a film. And I said, okay, we need to shoot it again. I mean, we will have to forget the old footage and we will have to shoot it again. Then only it's possible, because the building of the narrative was very critical, because it's a long story, 3 decades story, and there are various multiple layers to it. And it's not only about the struggle of forest rights. There are multiple things, consensus भी है, फिर ये भी है कि the message we want to give it to the society, because consensus can take place and it can happen in any non-tribal area also. So that was a kind of a message, and we wanted to give it. So we started over again, and then I went again and shot the entire thing. We used the older footage a little bit, but mainly we shot again, and the entirely, I mean, it's like treating a new project, but it all started over there. And so uh, I feel like, I mean, the beginning was somewhere else, and it ended up in making this documentary. So I always uh, wondered that how it started and how we made the film. How many days? The shooting took only for 5-6 days, but I visited couple of times before that. And so and the earlier footage was also there. So in 5-6 days we shot the entire thing. We shot something in Nagpur also, because Parag Cholkar lives in Nagpur. So his interview is shot in Nagpur. Rest of the things are shot in Mendaleka. So even Milind Bokil came over there. So I mean, we planned like that all the interviews will take place in the village only, instead of going, because Milind Bokil stays in Pune, but I didn't take the interview in Pune. I called him in Mendaleka, and we shot over there only. Any questions? I was just curious if you had, or if you thought about or considered interviewing the forest department just to get that perspective, and what was that experience like if you tried? So this question actually was asked earlier also, in the earlier screening also. I completely agree with that. There could be another side of the story. But the interesting thing is actually, I would like to mention it here. All the things are not possible to put in the film. For 3 decades, these guys were struggling. The entire village was struggling. A lot of agitations happened, a lot of satyagrahas happened, but not a single person is charged in the police station. I mean, there is no single police charge on any of the person. So even the conflict happened with the forest officers. The conflict was not like a kind of a kind of conflict. So I mean, these people were implementing whatever the guidelines they were having, and they were following their guidelines, whatever the forest department and the forest department told them. So also these guys also say that I mean, they are not enemies. They are having a very strong value system. So nothing was happened like a kind of a strong agitation. I mean, a kind of a fight happened with the forest officer. Even at the time of the bamboo selling incidents, Devaji himself tells that when they actually cut the bamboos and they had a plan to sell it off, they actually stacked all the bamboos in the village only, and the forest officers were also there. एंड वो भी उनके साथ में बैठ के बात कर रहे थे एक्चुअली, कि ये आप ऐसे नहीं कर सकते. सो इट वाज ऑल ऑन द टॉकिंग टर्म्स. तो एंड सेकेंडली, एक फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं होता है ना. सो देर आर मल्टीपल, बिकॉज 3-4 डिकेड्स का स्टोरी है. सो वो चेंज होते रहते हैं. सो
एक कोई फॉरेस्ट ऑफिसर का इंटरव्यू लेके वो होगा भी नहीं. इट्स अ काइंड ऑफ अ मशीनरी. So I didn't plan to have a interview of this. But if I mean any other director is there, then his perspective could be different, and somebody might would like to have the interview of the forest officer. But I didn't think that way. The democratization of the society, it was very easily implemented. So I was very curious that you both guys show there was a division between men and women, but what was the other social hierarchies, the castes and something like that? Because me coming from UP, this democratization of society is very difficult there. So I think tribal society, I feel that they are much more advanced than us here. Uh, like, I always feel like if you observe them, if you meet them, they are much more advanced. And thankfully, uh, like the caste system that we have as a Indian, most of the Indian, they have it, they don't have it that much. Like, they don't have it. Like, you will see few things, but you, like, but not the caste system that we see, and that not much hierarchy, because hierarchy is there. Of course, how hierarchy is that if person has the money, that hierarchy is there, like a class hierarchy, but not the with the caste hierarchy. And like, say, imagine, no, like people, like tribal family, like a tribal, he can, like a tribal couple, again, he can select, or girl can select, okay, I want to marry this guy, okay, and that girl can go and stay with that man for 2-3 years. And once they decide that, okay, now we can marry, they will marry. And after, sometimes what happens that, like after they have children, they get married. And after, like, sometimes what happens that they don't fight, like there is a fight going on, okay, they go separate ways. It's so simple, like they are much more advanced, and I feel like it's like we can learn from them. That's why. Yeah, that's why you keep. But there are villages where Adivasis and others live together. Yes. So okay, we're always. So what happens in such kind of villages? Because village that I come from, person, there are so many other communities. Oh yeah, the rules. So actually, I mean, this is a very valid question. I mean, in maybe the complete tribal villages are different because there is no hierarchy as such, and especially in Mendalekha, like it's a completely organic tribal village. But another thing is, they have a unique identity. Like these villages are not completely dependent on agriculture. Like we have a mindset, the city people, we are having a mindset कि rural areas मतलब agriculture. तो वो agriculture पे नहीं है, वो forest पे dependent है actually, and that's why the entire struggle happened over there. But talking about the hierarchy, I will say that ये जो बाकी के villages जो end में जो 2-3 लोग बोलते हैं, केशव गुरुंजय बोलते हैं और वो, तो उन्होंने बोला है कि they actually studied कि नॉन ट्राइबल एरियाज में ये कंसेंसस से काम करना पॉसिबल है क्या और किसी ने किया है क्या. एंड दे फाउंड दैट देयर आर सम लाइक पांचगांव है या फिर वो जो विलेजेस हैं वहाँ पे नॉन ट्राइबल्स भी है. एंड जब नॉन ट्राइबल्स कम्युनिटी आती है तो एक हायरार्की आती ही है. तो ट्राइबल्स का लाइफस्टाइल अलग है एंड नॉन ट्राइबल्स अगर मिक्सअप है तो वहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे रिलीजन्स भी अलग अलग रिलीजन्स की वाले भी लोग हैं एंड अलग नॉन ट्राइबल लोग भी है. और हायरार्की वहाँ पे रहेगी डेफिनेटली, सोशल हायरार्की है. एंड एक मैंने वो कट किया पार्ट एक्चुअली, बट जो एक पांचगांव, आई थिंक पांचगांव का ही एग्जांपल है, आई एम नॉट श्योर कि पांचगांव का ही है, बट किसी एक विलेज का है जहाँ पे वो कंसेंसस से तो काम कर रहे थे सर्वसहमति से. इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वसहमति से काम करते वक्त
उनका जो लीडर बन गया था, तो लीडर यहाँ पे लीडर का मतलब है कि वो बताता है और बाकी लोग सुनते हैं, ऐसे नहीं है, वो सिर्फ मोटिवेट करता है, ऐसे है। तो वहाँ पे जो स्टडी करने वाला और डीपली स्टडी करने वाला और जो मोटिवेट करने वाला जो युवक था, he was from the rather a Dalit community, and then also the consensus happened over there. तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम हायरार्की, सोशल हायरार्की की बात करते हैं, फाइनेंशियली इकोनॉमिकल हायरार्की की भी बात करते हैं, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसे हैं कि यहाँ पे हायरार्की तो है, वहाँ पे सोशल हायरार्की, लेकिन फिर भी जब कंसेंसस से काम करना शुरू हो जाता है, वो कहीं पे एक बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाके, मतलब जो फैमिली की बार बार एक्चुअली बात हो रही थी मेरे फिल्म में, तो फैमिली की बात इसीलिए की गई है कि भले ही अलग अलग कम्युनिटी के भी लोग हैं, रिलीजन के भी हैं, लेकिन एक फैमिली जैसा वो बॉन्डिंग उनमें दिखता है, जहाँ पे ये कंसेंसस से या फिर सर्वसहमति से काम होता है. सो दैट्स व्हाई द मॉडल एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट, जो मेंडालेका की पूरी स्टोरी है, देयर वी एक्चुअली वांट टू गिव अ मैसेज लाइक कि मेंडालेका से हम क्या सीख सकते हैं कि इट्स बेसिकली अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग सिर्फ वोट करना उनका काम नहीं है, दे एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, गवर्निंग प्रोसेस, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड जब आप पार्टिसिपेट, करेक्ट, बट पार्टिसिपेट करते वक्त एक मोहल्ले में अगर हम ये मॉडल रिप्लिकेट करने की कोशिश करें, तो द सेम थिंग विल बी देयर कि अलग अलग कास्ट के लोग होंगे, अलग अलग रिलीजन के होंगे, हायरार्की भी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक मोहल्ले को एक साथ आके काम करना पड़ेगा. सो दैट्स बेसिकली a kind of a message that we can take from there. I was just thinking of I worked in that area, so I understand Korchi and Kurkheda on that area. It's good to see public in the Republic, at least finally, But, Mendalika has become so ideal that what he said in Karjat, if you ask for the self-governance, same style, and ask for the permission for that Karjat area, it will not happen. But if Mendalika asks for anything, they will get. Because, they have gone beyond. उनको मना करने की अब किसी के पास capacity नहीं है. Okay, but if you want the same model to happen in some, like Karjat, massive land encroachment, massive tribal land is being sold at a throwaway price. But if you ask for that kind of a self-governance, that kind of a mechanism, doesn't happen. This has been a hand-on experience, I'm telling you. Yeah, I mean, Avoid by Mumbai. They say, Pune wale, Mumbai wale, aage zameen kharid ke jaate hain. They say, and they are insisting for individual rights. They are just not giving you community rights. They're just it's very difficult since very difficult. So what's the difference between my works in one place where it's a I don't know, because see, it is also the commercialization of the area, because Tarjat is built in Pune and Mumbai, so that kind of a land price. And the thing is that this is what the villagers they say, that individual rights wait is just come here. The individual right wait is बहुत आसान है किसी एक इंसान को तो, but community right में बहुत आसान नहीं है इतने सारे गाँव को. Yeah. Man, I would like to add something. These are the observations on this. Yeah, definitely. यहाँ पे एक चीज़ I would like to mention कि मतलब जब बात होती है मॉडल की एंड रिप्लिकेट करने की, तो वहाँ पे एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि the people should be willing to implement that model. So unless and until people are willing, तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती. तो अगर एक मोहल्ले में, जैसे वो बोलता है कि कमर्शियलाइज है ना इतना, करेक्ट, because some people are having lot of resources and some people are not having resources. तो जो जिनके पास resources है वो छोड़ना नहीं चाहेंगे. So जब तक वो willingness नहीं होगा तब तक वो बात नहीं होगी. willingness सबके पास है तभी वो बात हो सकती है. So even I mean मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि when I first time I heard about मेंडालेका, तो I had lot of questions in mind. मतलब कि जब मैं शूटिंग के लिए या फिर वहाँ पे नहीं गया था विलेज में, जब मैंने सिर्फ फुटेज देखा था, तो I had lot of questions कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ है.
ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ पे मे बी देयर आर सम प्रॉब्लम्स एंड जो कि बाहर नहीं आ रहे. बट when I actually went there and started talking to people and when I actually interacted with them, तो मुझे पता चल गया कि इवन मोहन भाई भी वही बोलते हैं या देवा जी भी बोलते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में अगर जो प्रॉब्लम्स है, कोई भी कम्युनिटी में जैसे प्रॉब्लम्स होती है वो यहाँ पे भी है. ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोंट बी अंडर दैट इम्प्रेशन. यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, बट एक विलिंगनेस है लोगों के पास कि सबको साथ मिल के काम करना है. ये वो विलिंगनेस है. एंड सेकेंडली ये तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जहाँ पे द साइज ऑफ द एरिया इज कि मतलब अभी जो ग्राम सभा है वहाँ पे एक साथ बैठ के बात करते हैं ना, तो ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे उतना ही साइज होना चाहिए कि एक साथ बैठ के हम सर्वसहमति है या नहीं इसके बारे में बात कर सकते. तो उतने ही साइज के लिए वो मॉडल रिप्लिकेट हो सकता है. एंड देन यू कैन आई मीन you can have different mohallas and then you can replicate. Secondly, जो वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, मतलब हमको ऐसे लगता है कि ग्राम सभा में सारी चर्चाएं होगी, डिस्कशंस होंगी एंड देन दे विल टेक अ डिसीजन. ऐसे नहीं होता है. सो ग्राम सभा हैपन्स ओनली फॉर 1 hour मैक्स, क्योंकि उनको काम वो इतने ज़्यादा डिस्कस करते करते बैठने वाले लोग ही नहीं. वो उठ के चले जाते हैं अपने काम के लिए. तो 1 ही घंटा मैक्सिमम ग्राम सभा चलती है. तो जो ग्राम सभा में जाने वाला एजेंडा है ना, दैट इज डिस्कस्ड अर्लियर ओनली. मतलब 15 दिन 1 महीने से चल रहा है, ये मोहल्ला में चल रहा है, वो मोहल्ला में चल रहा है, एंड सबको मालूम है कि सर्वसहमति होने वाली है तो ही वो ग्राम सभा में एजेंडा रखा जाएगा. अगर नहीं हुई, अगर मेरे मोहल्ले में नहीं हुई, तो मैं पहले ही जाके बोलता हूँ कि हमारे मोहल्ले में तैयार नहीं है लोग, ये अभी ये एजेंडा मत निकालो, अभी और स्टडी करना पड़ेगा. We need to study that topic. We need to come on the सर्वसहमति, तभी ये एजेंडा रखेंगे. So that kind of a work process. In fact, Janantik, did you want to talk about either your process of making the film, the challenges that you experienced while doing so, and the insights that sort of you discovered through the process of making the film? Don't worry about pitching it. Just you could hold it. with a song or the background with it. So, see, like I was making I'm making a documentary on Narmada River for long, and my personal, political, and all things are getting mixed. And at that time, I got this documentary. Like someone approached me, and then we went there. Like initially, I was thinking like because I'm an urban person. I come from Surat, and because I thought that okay, these people are of course encroaching forest land and they are farming, and then after that let's see and go and meet them, research them, and go. And once I reached there, I realized that these people, of course, they are farming on forest land, but they are farming on forest land for generations. Like before, around 1960s, 1950s, they were farming for long, and at the same time, they are conserving the forest for long, and that is more important. But when Jungle Khata came, like a forest land people, forest officers, and they have some kind of a nexus between like corporate companies and like this paper company, and that's how they were selling the bamboos at very cheap rate, and that's how they were against these people. Like these tribals were against that, and that's how the struggle started from that. And all they approached this apni Trupti Ben and Amrish Bhai and around 1988, and this is how the struggle began for them. And like it was a long struggle, like it was, we couldn't cover many of the things, but it was very, very inspiring, and I hope it can inspire many people, like many like tribals, like non-tribals, any across the world. Because it's a, and they like Trupti Ben said, like we can't like, because government is always have the more forces, like they have more power, so we can't
do violent struggle with them. We have to do non-violent struggle. Otherwise, it's not possible to us to survive. Otherwise, they will kill us like anything. Like they, for them, we are just like tribals are just the numbers. So that's how their approach is very much same here. Like their approach is very much different from approach that we saw in Naxal areas or somewhere else. So like over the years we learned, and these people have learned, and of course like these people have also learned from JP. Like they are the product of the JP movement, Trupti Ben and Amrish Bhai also. Thanks to JP, like we are here. Actually, I would like to say something about it. Whatever the Mandalika is doing, तो नॉन वायलेंस के बारे में सो वन थिंग इज कि पुलिस केस कोई भी हुआ नहीं, एक भी मेंढालेखा के गांव के लोगों के बारे में। एंड सेकेंडली मतलब कोई भी स्ट्रगल करते हैं तो वो नॉन वायलेंटली करना वो पहले से डिसाइड करके ही करते हैं। मतलब स्पेशली अबाउट द गोटुल स्ट्रगल कि ऐसे लगता है कि ये अदरवाइज ये कैसे हो पाता, बट एक्चुअली दे इम्प्लीमेंटेड दैट वे। मतलब कि तोड़ दिया तो फिर से बांध दिया, तो फिर से तोड़ दिया तो फिर से 12 गांवों ने बांध दिया। तो दैट वे दे आंसर्ड इट इन देयर ओन वे, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली दे अचीव्ड द थिंग। अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट थिंग कि अगर वो वायलेंट एजिटेशन में चले गए तो जैसे ये बोल रहे तो वो कब के ख़त्म कर देते थे उनको। एक इंसिडेंस मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि लाइक देवाजी मेंशनड इट, आई डिडंट हैड दैट इन द फिल्म, कि इवन पहले द गवर्नमेंट पीपल वेर एक्चुअली अंडर द इम्प्रेशन कि ये लोग नक्सल है, क्योंकि ये ऐसे घोषणाबाजी कर रहे हैं ना कि हमारे गांव में हम ही सरकार, तो ये नक्सल लोग हैं ऐसे। एंड इनके पास नक्सल लोग आए भी थे। एक्चुअली दैट एरिया इज अ कंप्लीट नक्सल अफेक्टेड एरिया। तो हाँ, तो वो नक्सल आए इनके पास और इनको बोलने लगे कि अरे आप बोल रहे हो वही हम बोलते हैं, एक्चुअली हम मतलब लोगों के लिए हम काम करते हैं, तो आप हमारे साथ काम करो। सो दीज पीपल वेर वेरी वाइज पीपल, एंड उन्होंने उनको बोल दिया कि आप जो काम करते हैं और हमारा काम है वो अलग है या सेम है, वो हमको डिसाइड करने दो, आप मत बोलो। एंड हमारे गांव के लिए क्या चाहिए वो सिर्फ हम गांव वाले ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ग्राम सभा में नो फॉरेन पर्सन इज अलाउड। तो ग्राम सभा में जो डिसीजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ गांव वालों का होता है। स्टडी सर्कल में बाहर के लोग आ सकते हैं, लेकिन जो ग्राम सभा होता है उसमें सिर्फ गांव वाले ही होते हैं। तो उन्होंने नक्सल्स को सीधा बोल दिया कि ये गांव वालों को डिसाइड करने दो। सो दैट वे दे एक्चुअली केप्ट दिस पीपल अवे। सर वो सहमति जो आपने बताया कि वो सोशली पॉसिबल है, फाइनेंशियली पॉसिबल है, लेकिन जब पॉलिटिकल बात आती है तो वो उसमें डिस्प्यूट्स होते ही रहते हैं। तो भी गांव में सरपंच वगैरह है तो वो सिस्टम कैसा चलता है? क्योंकि मैंने कुछ पश्चिम महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में से कुछ गांव ऐसे देखे कि जो सरपंच है आज तक उस गांव में इलेक्शन हुआ ही नहीं है, सर्वसहमति से डिसाइड करते कि इसे सरपंच बनाते हैं, कुछ फंड आता है गवर्नमेंट का प्राइज के तौर पर कि इलेक्शंस नहीं हुआ तो उनको बेनिफिट मिलता है। तो ऐसी क्या सिस्टम है इस गाँव? तो इस गांव में भी सिमिलर है एक्चुअली, कि गांव सर्वसहमति से काम करता है, लेकिन उनका जो ग्राम पंचायत है वो 3 गांवों से बना हुआ है। जैसे पराग चौकर बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत की सिस्टम बहुत अलग है। वो ऑर्गेनिक विलेज को एक ग्राम पंचायत होती है ऐसे कुछ नहीं है, 4-5 भी ग्रुप ग्राम पंचायत होती है। तो यहाँ पे भी 3 गांव एक साथ है। तो एक है इनका मेंढा, फिर लेखा है और एक है। तो ये जो 3 गांव है ना, तो उनको सरपंच होने का जो ये है वो बाय रोटेशन आता है। तो हर एक गांव को बाय रोटेशन एक टर्म मिलती है। तो जब बारी इनकी आती है, बाकी गांव में इलेक्शन होते हैं सरपंच के लिए, लेकिन इनके गांव की टर्न जब आती है ना, तब वो टर्न के टाइम को वो सर्वसहमति से डिसाइड करते हैं कि कौन सरपंच बनेगा। एक वो बात है। दूसरी बात ये है कि देवाजी जो है वो बता रहे थे मुझे कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टीज अप्रोच्ड हिम।
एंड सीधा सीधा टिकट ऑफर किया था उनको। एंड ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच्ड हिम कि ये टर्न बाय टर्न आके कि आप हमारे इस पे आप कॉन्टेस्ट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे उसमें जाना ही नहीं। एंड ही एक्चुअली आई मीन डिक्लाइन ऑल द ऑफर्स। तो मैंने उनको सीधा सीधा बोला कि ऐसे कभी मोह नहीं हुआ कि मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आप बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जा सकते थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ, शायद बड़े लेवल पे पहुंच जा सकता था, लेकिन लोगों के लिए काम नहीं कर सकता फिर। तो मुझे ये क्लियर है कि मुझे लोगों के लिए ही काम करना है, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ही एक्चुअली डिक्लाइंड ऑल द ऑफर्स। एंड तो इसलिए गांव में कोई पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन का सवाल ही नहीं आता है। वो इलेक्शन सिर्फ आमदार और खासदार के लिए जो करते हैं वही करते हैं, सरपंच के लिए नहीं। And at the same time, a Gram Sabha is an independent body than the this panchayat. And at the same, like in these villages also. And another thing is, we don't know. Okay, right now in this Gram Sabha, like in Medhalekha and one like villages that we shot, Vandri and Sagai and all those now, they have very honest Gram Sabha members. But right now, after 15 years, this generation will go on. Then what will happen? We don't know. They might like they will get corrupted. Like we don't know. Correct. Weirdly, while on the Smiths Colorado, he needed to do it to kill because the gunfight get up and he saw them. Was long ways. Was it the real? How do I do that? इतना डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि दे अप्रोच कपल ऑफ टाइम्स एंड लेकिन गांव ने उनको दूर रखा है। एंड अभी तो नक्सल मेंढा का नाम भी नहीं निकालते, बिकॉज मेंढा का नाम ऐसे हो गया है ना वहाँ पे। इवन मतलब व्हेन वी वर गोइंग देयर फॉर द शूटिंग, तो शूटिंग जाते वक्त पुलिस ने गाड़ी रोक दी बीच में। तो बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम नागपुर, तो बीच में गाड़ी रोक दी और माइनर कुछ था, मतलब कि हमने वो कैरियर पे कुछ चीज़ें रखी थी तो ऊपर नहीं रख सकते आप अंदर, तो गाडी रोक दी। तो कुठे कुठे चालला? मेंढ्याला चाललो देवाजी भाऊंकडे, ठीक जाओ। सो इन द एंटायर एरिया पीपल नो अबाउट देयर स्ट्रेंथ एंड देयर कैपेबिलिटीज। तो नक्सल को भी उन्होंने दूर रखा है, आई डोंट नो। So, you mentioned in your documentary about the Gram Gang, where they all come together and give their property together. So, first of all, crazy, because half of our family feuds are that. But my first question comes in like, how does very basic things like inheritance or very basic like inheritance or family structures of making something on there, how does it operate? And in the larger scheme of things, considering with UCC, thoughts of UCC coming in and common laws for everyone, how does that look in, how does it affect the people over there with the laws of the country? So actually one important thing is कि ग्रामदान ऐसे है कि इंडिविजुअल ओनरशिप खत्म हो जाती है, द ओनरशिप गोज टू द ग्राम सभा। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो देयर इज़ नो चेंज। मतलब कि जो फार्मर उस अपने ज़मीन पे काम कर रहा है वो अपने ज़मीन पे ही काम करेगा, उसका बेटा उसी ज़मीन पे काम करेगा। सो द practical working thing will be same before Gramadan, after Gramadan. Only difference will be he will not be able to sell that land क्योंकि it's now the ownership of the ग्राम सभा। तो वॉट एवर उसके बारे में अगर कुछ करना है तो ग्राम सभा को करना पड़ेगा। एंड एग्जैक्टली इट शुड बी लीगलाइज ना। सो दैट्स वाई ग्रामदान एक्ट केम, बहुत पहले आया है ग्रामदान एक्ट। जब विनोबा जी ने काम शुरू किया था तभी वो ग्रामदान एक्ट उसके बाद गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया। तो ग्रामदान एक्ट के बारे में पराग छोड़कर बोलते हैं फिल्म में कि
उसके वो कायदे हैं कि एटलीस्ट 75% ऑफ द पीपल शुड बी रेडी फॉर इट विलेज के, एंड 60% ज़मीन, 75% फार्मर्स की, 60% ज़मीन विलेज की होनी चाहिए, वगैरह वगैरह. सो देर आर क्लॉजेस इन इट, and but even today the government and the government officials, many government, not all of them, but many government officials are unaware about the act. और ये मेंढा लेखा ने कब का एक्चुअली किया था ग्रामदान का ठहराव, लेकिन वो उनको जो सर्टिफिकेट आया उसके लिए उनको ही फॉलोअप लेना पड़ा कई बार कि हमारा अभी तक सर्टिफिकेट आया नहीं, हमारा अभी तक आया नहीं. सो एंड दैट बिकेम 20th विलेज इन महाराष्ट्र. अभी पहले 19 विलेजेस थे ग्रामदानी, दिस इज द 20th. तो इस तरह से वो लीगल भी है और प्रैक्टिकल भी है उनके लिए. तो बस वन विलेज बोले. हाँ बोले, या करेक्ट. I wanted to ask about the school. Basically, do they control the educational policies also? How do they imbibe the Actually, knowledge? schools are running like the schools run in any other villages. Like government school is there in मेंढादेका in 4th standard, and उसके बाद वो मेंढा को जाते हैं या फिर धानोरा जाते हैं. सो 5th से उनको दूसरे गांव में जाके स्कूलिंग करना पड़ता है. एंड स्कूलिंग का सिस्टम वही है जो गवर्नमेंट का रेगुलर स्कूलिंग का सिस्टम है, वैसे ही चलता है. One thing is very important, like he said, he raised a very important point is कि like next generation में वो कैसे होगा, because everywhere it's the same worry actually कि we really don't know कि 20 years के बाद में अभी की जो जनरेशन है वही इसी वैल्यूज़ पे चलेगी नहीं चलेगी, या फिर वहाँ पे भी उतना ही विलिंगनेस होगा साथ में काम करने का, वो अभी मालूम नहीं है. सो वो 20 साल बाद ही हमको देखना पड़ेगा. बिकॉज स्कूलिंग से मुझे याद आया कि जो बाहर जाते हैं, मतलब देर आर लॉट ऑफ, इसके पहले जो स्क्रीनिंग्स हुए वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि माइग्रेशन होता है क्या, मतलब वहाँ की जनरेशन बाहर जाके उनको लगता नहीं क्या सिटी लाइफ में जाके जिए. तो वो वहाँ पे अभी तो नहीं देखने को मिला. ओनली द corrupt thing I found in the village is they are addicted to Telugu cinema. Not Telugu as language, but the gaudy and the masala movies they keep on watching on YouTube. तो वो एक एडिक्शन मुझे दिखा. बट बाकी मोस्ट ऑफ द यंगर जनरेशन दे गो फॉर स्कूलिंग इन अदर विलेजेस. इवन सम ऑफ द गर्ल्स हैव ट्रैवल्ड टू पुणे एंड नागपुर, लेकिन वहाँ पे जाके पढ़ाई करके वो वापस आए हैं. सो माइग्रेशन का उतना प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन विलेज. उनको बाहर बहुत स्ट्रगल लगता है, मतलब if they come into the cities the earning is a big struggle, बट वहाँ पे वो नहीं है, दे आर इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. तो माइग्रेशन का अभी तो प्रॉब्लम नहीं है. एंड सो द टेम्पटेशंस अभी तो यूट्यूब का टेम्पटेशन दिख रहा है मुझे. And like it's like in our villages that where we shot, like start reverse migration have started happening, because why? Because that's money is there in their own villages. The farming is started, like money from the forest is there. So like lot of, and these handlooms they started appreciate, and that's how like maybe things might of course will improve. Hope for the best. शुक्रिया दोनों डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए. लाइक मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली सेकंड बार देखी, डिजिटल में देखी थी, और दूसरी डॉक्यूमेंट्री बहुत दिन हो गया ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखने को मुझे, आप मैंने सबटाइटल्स नहीं पढ़े ना. तो कमेंट ही एक क्वेश्चन नहीं है. आई थिंक थैंक यू फॉर कैप्चरिंग दी स्टोरीज, बिकॉज मतलब मेरे एंसेस्ट्रल फैमिली इज फ्रॉम विदर्भ, और हमेशा उसके बारे में नेगेटिव ही चीज़ें सुनने को मिलती है कि यहाँ पर गॉड है या फिर नक्सलवादी है या ये है वो है. पर लाइक ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो माइक्रो कॉन्सेप्ट्स है, ग्राम सभा का, सेल्फ गवर्नमेंट्स का, FRA का, आई मीन इतने अच्छे से कैप्चर किया है इन डॉक्यूमेंट्रीज में कि मतलब मुझे याद रही जो मैंने स्कूल में पढ़ा था या लीगली
जो पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्री के थ्रू, लोगों के थ्रू, आई थिंक काफ़ी चीज़ें कॉन्क्रिटाइज हुई दिमाग में, काफ़ी कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया और पता चला कि ऑन ग्राउंड कैसे होता है. और इवन लाइक मैं जब आखिरी बार जब गडचिरोली गया था तो विनोबा की काफ़ी सारे राइटिंग्स हैव डिसअपियर्ड, या फिर इट्स हार्ड टू गेट अ कॉपी ऑफ ऑल दीज थिंग्स एटलीस्ट इन इंग्लिश. मतलब मैं मराठी में इतने अच्छे से पढ़ नहीं सकता, तो मैं सर्च में गया था तो दानोरा और मेंढा लेखा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है या सुना है, पर देख के लाइक अलग ही चीज़ समझना. थैंक यू फॉर कैप्शन. Thank you. Would you elaborate on the Nistar rights? I mean, the Nistar rights are given by the government or how they do? So whatever information I am having, so I can definitely share it. Yeah. So Nistar rights actually, जब British time में ही lot of communities were there which are living in the forest area or near forest area. They are dependent on forest. And that time also they were dependent on forest. So वहाँ पे तब के जो भी जो authorities थे who were having the tie-ups with the British government, so they actually told the British government that these people should get that right. मतलब क्योंकि the forest department concept started with the British era. तो तब तक forest department नाम का concept नहीं था. ब्रिटिशर्स ने ये कंसेप्ट इसलिए लाया है कि दे वांटेड टू गेट द रेवेन्यू आउट ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काइंड ऑफ अ थिंग. तो वो जब ब्रिटिशर्स का जब गवर्नमेंट शुरू हो गया था, तभी वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ थे, मतलब जो भी वहाँ के सरंजाम थे या फिर जो ज़मींदार थे या फिर वैसे वाले लोग, तो उन्होंने बोला था कि इन लोगों को दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड दे शुड हैव दैट freedom to go and at least they would survive. So because otherwise people were against would have against the zamindars and वो बहुत बड़ा force होगा, और इसलिए जमींदार ने बोला था, और इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तभी उनको निस्तार राइट्स दे दिए. सो व्हेन एक्चुअली आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, पहले तो वो मध्य प्रांत था, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मध्य प्रांत वगैरह वगैरह, तो स्टेट्स अभी बने नहीं थे वैसे आज के जैसे स्टेट्स. तो मध्य प्रांत ने उसको मंजूर कर दिया. जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था वो मध्य प्रांत ने मंजूर कर दिया, एंड मध्य प्रांत ने जो मंजूर किया था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंटिन्यू कर दिया. एंड ये जो डॉक्यूमेंट है वो मेंढा लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं था उसका, तो उनको मालूम भी नहीं था. सो ये मोहन भाई जैसे लोग जो है जिन्होंने बोला और वो सब स्टडी शुरू हुआ, तो उन्होंने जाके ढूंढने की कोशिश की ये डॉक्यूमेंट कहाँ है निस्तार राइट्स का. तो उसका भी पूरा स्टोरी है, मैंने बहुत सारी स्टोरीज निकाल दिए. तो उसका लंबा स्टोरी है कि हाउ दे एक्चुअली एक्वायर्ड दैट डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट आई मीन द ऑफिशियल्स वर नॉट रेडी टू गिव द डॉक्यूमेंट. तो मामलेदार बोलता है इसके पास जाओ, तलाठी बोलता है इसके पास जाओ, फिर फाइनली जिसके पास था वो बोला कि पैसा दे दो. सो ये मेंढा लोगों ने एक तरकीब निकाली है. उसमें जब भी कोई पैसा मांगता है, ब्राइब मांगता है, तो उनके पास एक सिंपल ये है, बोलते हैं कि हाँ दे देंगे, कितना देना है. तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वॉट एवर 500 रुपीज़ to 1000. तो बोलते हैं कि ठीक है आप लिख के दे दो, फिर हम लेके आएंगे. क्योंकि हमारा तो ग्राम सभा है ना, तो ग्राम सभा अप्रूव करना पड़ता है, तो हम हमारे जेब से नहीं देते ना, तो आप लिख के दे दो, फिर हम तो देन दे गॉट द डॉक्यूमेंट. एंड तो लंबा उनका स्ट्रगल था उसके लिए भी. So this is a common document for all or how is it? फॉर ऑल द विलेजेस देयर इज अ डॉक्यूमेंट. तो ये मेंढा गांव का डॉक्यूमेंट है. या Those documents were basically granted by CK and Berar, Central Province and Berar. सेंटर पॉइंट मध्य प्रांत. Correct. So would my village in Karzat also have a document like this, the Nistar rights? Because we have There should be actually, if they are having the निस्तार राइट्स, तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए.
ये पॉइंट को घाटने देखते तो जंगल को और भी Bombay president one out the other was a part of Bombay presidency. Right. Like CP and Berar was a state, and Bombay presidency was one state, and so you need to very give a terms of Maharashtra government Bombay presidency is in a person calling. I see. Okay. But then Yeah. Indeed. Okay. Any more questions to the directors? Do you see any critiques towards participatory democracy in the sense that, let's say I'm a gender minority, and if I have to convince everyone in this room to give me space or practice marriage in the perspective that I have, it might not be taken ahead, or it might be very difficult considering how traditions and norms go in. So, what are your thoughts on these kind, and are there such kind of issues that come up in such kind of discussion? So, in my opinion, I also had a similar kind of questions in my head before I started working on the documentary. तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बहुत अलग तरीके से फंक्शन करता है एक्चुअली. तो सॉरी तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में ऐसे है कि जो गांव के लिए डिसीजंस लेनी है, इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल डिसीजंस एंड द इंडिविजुअल लाइफस्टाइल. सो मेनली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वहाँ पे फंक्शन करता है जहाँ पे हम गांव की बात करते हैं या फिर मोहल्ले की बात करते हैं. तो मोहल्ले में हमको क्या करना है, तो वो इश्यूज होते हैं जहाँ पे सर्वसहमति की आवश्यकता होती है. इट्स नॉट अबाउट द लॉज वी आर टॉकिंग अबाउट. तो लॉज की बात अलग है कि मतलब कोई मर्डर करना चाहता है तो उसको क्या परमिशन दे दे, तो वो वाली बात नहीं है यहाँ पे. सो दो लॉज वैसे ही रहेंगे. इट्स ऑल अबाउट द हाउ द व्हाट आर द इश्यूज अबाउट आवर कम्युनिटी. तो वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है. Look, look. Can I? Yeah. So I have a question about not connected to the main theme of the movie. You think about the woman who made demand that there should be no alcohol or limited alcohol. This alcohol create lots of problems. They have alcohol in the meetings. Yeah, the issue was like basically the issue was they wanted to start functioning with the Sarvasahmati, but the Sarvasahmati was there. They were practicing Sarvasahmati पहले से ही tribal villages में, but women were not allowed in the Gram Sabha in Meghalaya and the similar tribal villages. So when they asked women, तो women said कि हम वहाँ पे नहीं आएंगे बिकॉज आप दारू पीते पीते वो सब ग्राम सभा करते. कैसी ग्राम सभा होती है वहाँ पे. वी आर नॉट कंफर्टेबल टू कम. तो यू विल हैव टू स्टॉप अल्कोहल कंजम्पशन एंड और रिस्ट्रिक्ट अल्कोहल कंजम्पशन. क्योंकि पॉइंट निकला कि हमको तो दारू लगती है, मतलब वॉट एवर सेलिब्रेशंस दे आर हैविंग ट्राइबल्स में, तो वो कल्चर है टू कंज्यूम अल्कोहल. तो अल्कोहल बंद तो नहीं कर सकते. तो वी विल हैव टू रिस्ट्रिक्ट. तो रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, तो दे अगेन डिसाइडेड कि ग्राम सभा ही डिसाइड करेगी कि कितना अल्कोहल निकालना है इस सीजन में और कितने की आवश्यकता है. तो शादी है तो इतना चाहिए, ये फंक्शन है तो इतना चाहिए. सो दैट विल बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा एंड देन उतना लीकर गाँव में. लेकिन गाँव में लीकर शॉप नहीं है या फिर नोबडी सेल्स द लीकर. जो खुद बनाते खुद कंज्यूम करते और जितना ज़रूरत है उतना ही निकालते हैं. एंड देन अगेन दे आर हैविंग देयर ओन वेज ऑफ फंक्शनिंग. मतलब कि घर में जाके कोई लीकर कंज्यूम करे तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर शुड नॉट बी एनी गाली गलौज शाउटिंग बाहर, वो सब गुत्ता वो सब वो नहीं चाहिए. सो दैट वे दे एक्चुअली कंट्रोल्ड इट. But in any case, there are also going over celebration. So why they were consuming liquor? Like Gram Sabha is not a celebration. In tribal culture, they have a lifestyle. कि whenever शादी happens, I know that. But so Gram Sabha they used to come. हाँ, Gram Sabha because पहले तो सिर्फ men used to gather
इन ग्राम सभा अलग तरीके से ही फंक्शन करती थी ना, तो सिर्फ मेन होते थे, तो दे वर ड्रिंकिंग एंड दे वर टॉकिंग एंड वो सब चलता था आई गेस, मतलब उनके कहने से वैसे चलता था. And I believe it was not just alcohol, it was kharra also. The kharra that Yeah, so more of a like a you shot Mauda, no? Maua flowers. Like most of our tribal villages, they make the alcohol from Maua, those flowers, beautiful flowers, and they have nice, like a slight smell. And it's a Maua is a very mild kind of alcohol, so like it doesn't like affect, but over the period, like how these people are also consuming beer and all kind of a western kind of alcohol like this whiskey and everything, but usually always tribals consume this mahura and the khara. But that is also strong, very strong actually. Then it's how it is becoming here. And then we have one more question here. So मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक इज देयर आप लोग तो काफ़ी टाइम गाँव में रहे हुए, तो लाइक इज देयर अ पर्टिकुलर रीजन व्हाई दिस मूवमेंट्स और लाइक व्हाई दिस कॉन्सेप्ट्स stayed there or like emerged out of it? Just like continuing from what they all were talking about, addiction and alcohol. Cigarette children में दारू बंदी थी. I mean, there was a movement जब all the women of all the villages came together and they were making दारू बंदी बंदी. तो मैं बहुत बार सोचता हूँ कि like why like these things come out of a place जहाँ पे जो बहुत लोगों के मन में बहुत इसके बहुत नेगेटिव व्यूज है, बहुत पिछड़ा है, बट is there like because like it's connected to other political movements like Nabeen Woodshot because of NBA and like the whole moment happened over there, yeah, because chivalry में I mean other than this idea of Buddha and yeah self governance काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे, सर्च है या फिर पावाम पे है या फिर there has been historical resistance to मतलब नक्सलिज्म का इन्फ्लुएंस था, like there has been a strong anti-caste movement. तो I mean what is the reason you feel कि like these things emerged out of there or like maybe the organizations जैसे आर्चवाई नहीं है या फिर यहाँ पे जो सर दिखे उन्होंने facilitate किया, so do you think they were already there and they now we are telling their stories या फिर I mean yeah. Like for these villages that Archvahini worked, like they were feeling the crisis. Like we couldn't able to oppose the this government. We couldn't alone. We can't able to oppose the government, and that's how they needed the help of people, like little bit like literate people, and that's how they approach Amrish Bhai and Trupti Ben. And Amrish Bhai and Trupti Ben are NBA activists at one point of time, and then they were working for the rights of the Gujarat part of the Narmada area. And otherwise, I don't know, like it's come out of the necessity. Always I feel like whatever the movement or whatever this kind of movements, otherwise this movement come and die like within a few years. Because this is like this same movement, like this movement lasted for 32 years. 3 decades. This is not a small point of time. Like 2 generations must have passed. And so actually यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि Mohan Bhai and Devaji, they were in contact with each other since the Sampurna Kranti movement happened 80s में. तो जयप्रकाश नारायण एंड उस टाइम में जो लोग काम कर रहे थे उनसे वो कनेक्टेड थे, एंड दैट्स हाउ दे एक्चुअली इन टच विथ ईच अदर. तो मोहन भाई तो वहीं के हैं, मतलब ही इज़ फ्रॉम चंद्रपुर ओनली. सो उनको पहले से था कि गांव में जाके मतलब अबाउट एनवायरनमेंट कुछ काम करना. सो उनकी पहले भी एक संस्था थी वृक्ष मित्र करके. तो अब ये यहाँ पे मेंढा में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. तो एक्चुअली इनकी बात सही है. मुझे लगता है कि इट वाज अ नीड इन दैट एरिया कि वहाँ पे काम करना चाहिए, और वैसे लोग
एक्चुअली हर एक एरिया में हमको वैसे दिखता है कि इवन इफ वी लुक इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र वी कैन सी सम पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स, आई मीन जहाँ पे भी जो ज़रूरत है वहाँ पे वो वैसे उन्होंने काम किया है। तो वैसे गढ़चिरौली में और इसमें मुझे लगता है कि इन लोगों ने काफ़ी बड़ा काम किया है। Great. So with that, thank you very much. थैंक यू सो मच विकल्प। एंड आई ऑलवेज फील कि मतलब कि सिर्फ फिल्म दिखाना ये तो स्पेशली ऐसी फिल्म है, सिर्फ फिल्म दिखा के कुछ नहीं होता है। आफ्टर अगर जो भी लोग हैं दे आर एनग्रॉस्ड एंड इन द डिस्कशन, एंड इफ द डिस्कशन टेक्स प्लेस तभी मजा आता है। आप खास पुणे से आए जाइए स्क्रीनिंग के लिए, आई न्यू टू सूरत से। I think thank you क्योंकि ये दोनों फिल्म साथ में देखना like it's also enriching for us also, like I also learned a lot about this other region. Thank you very much. थैंक यू।